Hello friends, namaskar dosto. I'll do a very small video today because a bit busy I am. But I thought ये वीडियो करना जरूरी है because market में significant changes हो रहे हैं. So thought I should give an update on this one. तो चलिए जल्दी जल्दी एक बार स्क्रीन शेयरिंग पे चलते हैं एंड आई कम बैक टू द चार्ट्स में जरूर आएंगे. बट एक बार मैं अपना ट्विटर अकाउंट से कल एक पोस्ट डाला था जो यूएस मार्केट के ओवरऑल इंटरेस्ट रेट का. इसमें जो दिख रहा है क्लियरली आप देख सकते हैं कि कल पीपीआई डेटा आया था. अगर लेट्स गो टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कैलेंडर एंड वी विल बी एबल टू सी कि थर्सडे ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आया था इट वाज सिग्निफिकेंटली हायर. कोर इज आल्सो प्रीटी स्ट्रॉन्ग, कोर सीपीआई एंड आल्सो रिटेल सेल्स जो है वो भी काफी बेहतर ही था. Not significantly strong but relatively strong बोला जा सकता है. And that what it did, it changed the bond market का जो dynamics है that changed a bit. इतना दिन जो हम लोग देख रहे थे कि थोड़ा non farm payroll a bit lightly headline strong था. It was mixed data. After that US inflation data आया which was a bit stronger than expected. But हम लोग देख रहे थे कि overall interest rate बढ़ रहा था. So overall level was going up. बट कल फॉर द फर्स्ट टाइम जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज अ बियर स्टीपनिंग. बियर स्टीपनिंग इज व्हेन जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है वो उनके इंटरेस्ट रेट धीरे ऊपर जाते हैं वेयर एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट गोज अप फास्टर एंड ओवरऑल कार्व ऑफ द इंटरेस्ट रेट गोज हायर. मैं जरूर बात करूंगा रिगार्डिंग बियर स्टीपनिंग इन माय यील्ड कर्व सीरीज. बट दिस इज हैपेंड दिस सिनेरियो इज क्वाइट बैड फॉर रिस्की एसेट्स. तो इसको मैं जरूर नजर रखूंगा. फर्दर बियर स्टीपनिंग हो रहा है कि नहीं मार्केट का. मॉर्निंग से तो ओवरऑल थोड़ा ऑपोजिट करेक्शन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं. बट व्हाट बियर स्टीपनिंग इज बैड फॉर रिस्की एसेट्स मतलब इक्विटी ऑलरेडी दिख रहा है, इक्विटी में प्रेशर बिल्डअप हो रहा है. A lot of stocks are going zigzag. This is really not a great time to remain heavy invested. Do some very light investments, light swing trading sort of, and be careful on the breakout attempts. Many of the breakout attempts may fail down. And this bear steepening market is broadly good for overall dollar. And thoda I would say positive, neutral to positive for the commodity market as well. कॉमोडिटी मार्केट को बियर स्टीपनिंग के साथ साथ जो फ्यूल कर रहा है दैट इज स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन हिस्टोरिकली कॉमोडिटी मार्केट के लिए बुलिश रहा है. करंटली जो एडवांस इकोनॉमीज है उनमें क्लियरली स्टैगफ्लेशन दिख रहा है. आई थिंक जो गोल्ड के बढ़ने का वन ऑफ द रीजन है. So this bear steepening changed the dynamics of the market. Let's talk about my trades first. So Euro USD I have squared off fully. I have already बोला गया था कि I entered a bit of position. Now obviously yesterday it did not work out again. ये था, this was both good attempt था entry का. Now we will have to square off this one as a background. जैसे yellow हो गया, it is sustaining below the strong level. So I'll be closely watching. आप सामने FOMC आ रहा है next week जिसमें मेरा live session रहेगा and there I think we can see some strong move maybe downwards or further break depending on FOMC क्या बोलता है, means federal का जो interest rate committee. So यहाँ पे यूरो यूएसडी is will square off. GBP USD it was a great decision to square off 70% almost at the top. यही इसी के वजह से we are able to hold bigger stop loss. बैकग्राउंड येलो टर्न हो चुका है. कल वो पीपीआई डेटा के बाद सिग्निफिकेंट सेलिंग आया था. सो जीबीपी यूएसडी विल एग्जिट एंड स्टे आउट. साथ में जीबीपी आईएनआर विल एग्जिट एंड स्टे आउट. This is background yellow हो चुका है. This is yellow means neutral. There is no clarity. जब clarity नहीं है, but I think GBP INR still will go up as long as it stays above these two, 105.3 and 105.4. ये जो area इसके ऊपर sustain कर रहा है, तो next week में we might see a comeback. यूरो आईएनआर विल स्क्वायर ऑफ एंड एग्जिट. बैकग्राउंड पूरा येलो हो चुका है. पार्शियल प्रॉफिट तो हम लोग पहले ही बुक कर चुके थे. री एंट्री जो किए
दैट डिड नॉट वर्कआउट। ये जो री एंट्री मौका था इसमें मैंने लिया था, बट दैट डिड नॉट वर्कआउट, सो हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन। बैकग्राउंड येलो हो चुका है एज पर मेरा टाइम फ्रेम। योर टाइम फ्रेम में बी डिफरेंट, यू मे बी एन इंट्राडे प्लेयर, और किसी का सुन के तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। यू शुड सी योर सेल्फ चार्ट। आई एम एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, आई एम डूइंग दिस फॉर डिकेड। सो आप ऐसा नहीं हो सकता, यू मे इनकर लॉस। तो दिस इज अ वीडियो जिसमें मैं गाइड कर रहा हूं टू माय लर्नर्स एंड आल्सो एज माय वीडियो ब्लॉग। अगर आप करेंसी ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते, पहले जान लीजिए, देन यू लुक एट द चार्ट्स एंड देन मेक योर डिसीजन। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेड्स, जस्ट रिमेंबर दैट। JPY INR, if 3 days gap, nothing to do, small position hold करके मैं बैठा हूँ, I did not exit. These were exit signs. I'll hold because I think it has a potential to come back. Even अब जैसे मूड अगर चेंज होता है, रिस्क बढ़ते जाता है मार्केट में, JPY will benefit from risk of sentiment and also carry trade reverse होने का high probability. So let's see how it goes. I'm waiting for a full green candle to enter. Currently just position लेके I'll wait in the sideline. ये रहे ओवरऑल ट्रेड्स। बाकी जो ट्रेड्स है इसमें भी मैं ब्रॉडली बैठा हुआ हूं। यूरो येन फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बहुत फ्लैश हो रहा है, बट एज अ let me change the mother to now the currency setup. Fountain of gold is the mother setup, और करेंसी में हम लोग नीचे देख पाएंगे ये मीटर। सो ये मीटर में जापानीज येन इज इन अ फॉलिंग मोड and euro is also in a falling mode, so there is no point selling two falling currency. For pair trading, I should pair the strongest with the weakest. Now INR is rising, that's good. So INR if it's rising and euro pound and yen falling, we may in the short term, जो लोग छोटा टाइम फ्रेम में खेल रहे हैं, they can look for euro INR, GBP INR and JPY INR short positions. बट एज पर डेली चार्ट मैं थोड़ा रिलैक्स करके पोजीशन लेना पसंद करता हूं, एंड मैं वॉकीबॉल रहता हूं कि व्हाट्स हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स. So here is the euro yen. So similar sort of smaller chance in the lower time frame you may get with this meter. So currently in the bigger time frame में ये trades is just आज री एंट्री का एक मौका मिल रहा है विद अ फुल रेड कैंडल. तो यूरोपियन मार्केट तक मैं ऑलवेज वेट करता हूं फॉर फ्रेश एंट्री, स्क्वायर ऑफ के लिए नहीं. सो फ्रेश एंट्री के लिए आई वेट फॉर द यूरोपियन मार्केट्स टू ओपन अप, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ डिसीजन वेदर टू स्टार्ट अगेन विद द फोमो क्वांटिटी. अगर नॉर्मल कैंडल से देखा जाए, इट हैज करेक्टेड अ लॉट, वी कैन सी अ सेल ऑफ, यूरो वीक हो रहा है. So we can see a sell-off against the yen towards 159.4 or 158.7. So let's see how this one goes in the coming hours. Pound yen is another counter, a cross pair. इसमें और एक बार मैं ऑलरेडी फोमो ट्राई कर चुका हूं, डिड नॉट वर्क. उसमें प्रॉफिट नहीं कमाया, मार्जिनल लॉस में निकलना पड़ा. नेक्स्ट इज there may be a chance, but abhi bhi candle full red nahi hai. So pound yen we can't sell immediately. Euro yen I might think of selling. और एक ट्रेड जो मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम कमिंग टू दैट. बिफोर लेट्स लुक एट गोल्ड. गोल्ड में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी था, सो आई हैव स्क्वायर्ड ऑफ गोल्ड 50% to the tune of, अभी भी कैंडल बड़ा है. So if the background is yellow, I've entered at above 2060 and continue to build, and जैसे ही red caps आया, I've reduced 50% of the quantity, and उससे भी पहले reduce किया था. So overall जो मेरा reduction level हो चुका है around total position का 60%. So अब जो 40% बचा है वो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा अगर बैकग्राउंड येलो हो गया. अगर येलो नहीं होके फिर से ग्रीन सिग्नल आता है ऑन द बाई साइड, then definitely I'll start increasing position in to the tune of हर कैंडल के साथ 20 करके मैं फिर से 100% जो गोल्ड के लिए मेरा एलोकेटेड है, I'll be into that. Then it's let's go to XAG USD. Silver is the one which now I'm feeling more and more interested. तो इस जगह पे लग सकता है कि why I'm getting interested in after it has moved.
because first of all I'm holding some position, but gold jaisa nahi. But silver is looking interesting because everything is going down, and despite a rising dollar, silver is still rising. And if the ये जो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत टर्न अराउंड टुवर्ड्स हार्ड एसेट मींस गोल्ड सिल्वर के तरफ काइंड ऑफ टर्न अराउंड दिख रहा है, एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये रेनबो का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर. So I was looking at this. I was not confident in silver because technically अभी भी कुछ change नहीं हुआ. There are lot of resistances. Here we have a strong resistance 25.3. इसको break करना will be tough. We may see correction. There are resistance at 25.8. Unless silver squares off $26 per troy ounce level, तब तक ये resistance कई सारे हैं. बट यहाँ पे बियॉन्ड दिस रेजिस्टेंस अदर्स, ऑब्वियसली अगर आप गलत हो गए तो रेनबो के साथ एग्जिट तो मिल ही जाएगा. बट व्हाट आई एम थिंकिंग हियर, मार्केट माइट बी मूविंग मोर टुवर्ड्स अ हार्ड एसेट. मतलब जैसे गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर माइट फॉलो अप. इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ हार्ड एसेट देन दिस कुड बी अ गुड वीकली बाय सिग्नल. रेजिस्टेंसेस तो कई सारे हैं, दिख ही रहे हैं रेजिस्टेंसेस. So I'm aware of, but this can be such a move. If this is such a move, silver has a long way to go. If this is a turn towards the hard assets. So XAU USD, इसके साथ दो और पोजीशन है मेरे. जिंक स्टिल अभी तक हुआ नहीं 2225 का सिग्निफिकेंट ब्रेक. कॉपर इज गोइंग ऑसम. कॉपर का ट्रेड बढ़ते जा रहा है. 738 का ब्रेक होते ही now 746 का भी ब्रेक हो गया. as we said, copper is very likely now heading towards 780. और ये जो लेवल है, ये लेवल पे माउंटेन टॉप या 768 पे एक स्ट्रॉन्ग माउंटेन टॉप है. मेन जो रेजिस्टेंस है दैट 780, बट इसके पहले ही 768 और 65 पे माउंटेन टॉप आ जा रहा है. सो आई थिंक वी कैन सी सम करेक्टिव मूव. फेडरल रिजर्व आ रहा है नेक्स्ट वीक. टिल दैट टाइम वंस अगेन a राउंड ऑफ करेक्टिव मूव हो सकता है. बट कॉपर इज गोइंग अप. ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ न्यूज आया था कि जो चाइनीज smelters who are the largest producer of refined copper, so वो लोग अपने एक voluntary production cut करने वाले. that news even before the production cut that sparked the sentiment, and copper price is heading higher. So copper is a good trade लग रहा है, और it's more is pending. क्रूड ऑयल पहले हम लोग का जो लॉस दिया था, क्रूड ऑयल 6600 का, आई डिस्कस्ड इन माय लास्ट that I'll enter above this, only above 6600. So as it started moving above, once again this is entry, and I'm expecting now crude oil to rise towards this flat line 6000. ये मैं ऑलरेडी भी बोल चुका हूँ previous 6940 area. आज क्या दिख रहा है? A little bit of correction. I'm not worried right now. This looks like a good break. But crude oil में kind of zigzag volatility नजर आ रहा है. तो इसमें crude oil में what I did is I'm light on crude oil. मतलब position small है crude oil में. मेरा जो ओवरऑल कैपेसिटी है क्रूड ऑयल का, आई विल रिकमेंड नॉट मोर देन 20 to 25% राइट नाउ, because here the fundamentals and others are not fully there. I'm seeing a comeback in the forward curve, but forward curve is significantly not bullish. Calendar spread या forward curve जैसा आप बोलेंगे. So this is really I'm not very happy with crude oil, but technically this is a solid break. तो इसमें position लेना ही था technically, so we have entered. So I have entered with smaller quantity. Natural gas is counter. I was looking at the sell off. ये हम लोग बात किए थे. But overall, once again, daily chart is showing buy support, buy breakout. इसी का भी हम लोग बात किए थे. So that means we are seeing a flattish kind of now momentum, more rangish kind of behavior we are like to see. So these are the times. It's not to play the
ट्रेंड प्लेइंग सिनारियो नहीं है, दिस इज मोर अ रेंजेस सिनारियो। छोटा रेंज बना के आप, जो लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम प्लेयर्स है लाइक इंट्राडे, दी छोटा रेंज बना के बाई सपोर्ट सेल रेजिस्टेंस प्ले कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज, ये रहा एक मार्केट का आउटलुक। दिस ये जो बॉन्ड्स, दिस इज ये जो मूव उन्होंने दिया था, द बियर स्टिपेनिंग, दिस इज नॉट गुड फॉर रिस्की एसेट्स। और वो तो अपना निफ्टी एंड अदर्स में दिख ही रहे, निफ्टी इज बियरिश and gradually nifty is going down, and we have a full red candle for the first time, and we have a sell signal also for the first time, and this is a sell signal with a red background for a very long time. So this is a real weakness, and very likely the जो target हम लोग बात किए थे 830 and 740, these are strong levels, so very likely it can reach up to this area. So this looking bearish, really overall. So let's see the Nifty, and we'll look at the Nifty 500 as well. इसमें भी हम लोग एग्जिट की बात किए एंड ओवरऑल पोजीशन रिडक्शन था ही। सो ओवरऑल निफ्टी 500, निफ्टी 50 all exit okay, no, nothing on the buy side. This is a major turnaround, we can see a comeback, ये सपोर्ट है। प्रेफर ट्रेड्स भी बाई सपोर्ट्स, बाई ब्रेकआउट है, मतलब अभी भी बायर्स के हाथ में मार्केट है। काइंड ऑफ अब बुलिश रेंज नहीं रहा, एज पर प्रोबेबिलिटी इज मोर ऑफ अ बियरिश रेंज, so we should be careful. This is not a buy market. I'll prefer to avoid stocks right now, more towards derivative, to look at how we can benefit from this changing tide in a Nifty, Bank Nifty, and overall equity market. So that's all from my side, friends. I hope this video is helpful. अगर ये आपको help कर रहा है, don't forget to like and subscribe to my channel. All the best from my side, and happy trading.